Hey guys, hi, what's up? My name is Rukma. Welcome back to my channel, Rukma's Life. In today's video, we are doing a huge product empties. I'm gonna give you the reviews of all of these products that I've used, and I think I did the last product empties in the month of September. So what I used to do previously, I used to post one empties video every month, but now I've decided that every 3 months I will do one of these videos. So every year you will get 4 of these videos. Okay, एक महीने में इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं एम्प्टी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 3 महीने में काफ़ी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं. सो लेट मी जस्ट शो यू कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव एम्प्टीड फ्रॉम सितंबर टू नाउ. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू. These are all the products, you guys. I have lots and lots of variety in here. There is body care, there is skin care, there are fragrances, and there's hair care, and very very little bit of makeup. Like you all know, makeup में उतना यूज़ नहीं करती हूँ, तो एम्प्टी भी उतना ज़्यादा नहीं होता है. बट येस, बाकी 4 कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास. आई एम गोना टेल यू, like, give you speed reviews. I'm gonna tell you if I'm gonna repurchase these or not, and I hope you can see my small little cute Christmas tree in the background. This I assembled only for Vivek, who is my 32-year-old husband. Yes, I've assembled this for him because he's a Christmas fan. He loves winter, he loves Christmas, he loves everything Christmassy and winter and Harry Potter and hot chocolate. So उसके लिए मैंने specifically इसको assemble किया है. So I've just kept that in the background for today's video. And yes, like I showed you, बहुत सारे products हैं. So काफ़ी लंबा video बन सकता है. So I will recommend sitting with your chai, coffee, green tea, hot chocolate, whatever it is that you like. And without any further ado, let's get started. All right, you guys, I am not going in any particular order. This is going to be a very very random order. सबसे पहले I can see this hair mask from L'Oreal Paris. This is their Bliss Unlimited Pro Keratin mask. Okay, now this one is for rupees 990, I think. Yes, that's the MRP. And इस mask में मैंने at least last 1 से 2 साल में कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं देखा है. For some reason इस पे there's never any offer. But yes, this is a very very good hair mask. In fact, this was the hair mask which I was using till up to 1.5 weeks back, and I love what this does for my hair. This makes my hair very very smooth, very very soft, very very frizz free, manageable. I just love how it makes my hair length basically, because mask तो वैसे भी length पे लगाते हैं. So yes, I'm definitely gonna repurchase. Right now I'm using the one from Love Beauty and Planet, their lavender and argan oil hair mask. वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन this one gives very very good competition to that, and I'm definitely gonna be repurchasing. Okay, now I'm gonna show you 2 body washes. The first one is the Guava D10 body wash from M Caffeine. Okay, this is what the body wash looks like. Now this smells definitely of guava, but it does not have a very good smell. It does smell like guava, but I am not too fond of the smell, firstly. Secondly, I don't think the smell stays too long on the body. It does clean you very well, but I don't think the smell lingers on the body, and I want a body wash for me which will linger on me. I like those kind of body washes. So इसका तो smell बिल्कुल linger नहीं करता है. I don't know, I personally didn't really enjoy this particular body wash from M Caffeine, so I am definitely not going to be repurchasing this. I had a lot of hopes because M Caffeine was doing very good body washes recently, but then this one didn't really work for me. But I have a recommendation from M Caffeine itself, which is the Blueberry Blast body wash. Okay, this one is with blueberry extracts, vitamin E and coffee oil. This is not something which I purchased on my own. My best friend had actually gifted me M Caffeine के कुछ like sets on my birthday, and one of those sets had this particular body wash from M Caffeine. Oh my god, this particular body wash just blew my mind. This is such a good body wash. It's very very good, thoroughly cleanses the body, very good fragrance. This fragrance lingers as well. It's a very very good body wash. So if I have to at all repurchase something from M Caffeine, it's obviously going to be this particular blueberry one, and I am not going to go for the guava one, guys. This one didn't really do anything. Okay, next up I have a night repair cream with me. This is the retinol plus ceramide night repair cream from Dot & Key. If you guys are above 25 or above 30 and you guys are looking for a good retinol, I think this one is a very very good one to start off with. For beginners, it's a very very good retinol night cream. I have used this, and I think if I again want to come back to my retinol, I think I would like to go for this one, because this one didn't really break me out, or didn't really cause that much damage to my skin. I actually used to find my skin quite bright,
लाइट एंड क्वाइट सॉफ्ट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वेन एवर आई यूज टू अप्लाई इट. तो येस, काफ़ी अच्छा है ये, फ्रेग्रेंस फ्री ही है रिलेटिवली, एंड डॉट एंड की का है. सो डॉट एंड की के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता ही है कि बहुत बहुत अच्छे होते हैं. सो आई पर्सनली रियली एंजॉयड दिस. इफ यू आर अ बिगिनर हु इज वांटिंग टू स्टार्ट आउट विथ रेटिनॉल, आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. Next, I'm going to talk to you guys about this particular face wash from Eucerin. This is their triple effect cleansing gel. Blemish prone skin के लिए है ये basically. So मैंने इसको लिया था for my acne blemishes and एक दो active acne थे उनके लिए. Now this particular face wash is kind of a confusing product for me. If I have to decide कि मैं इसको repurchase करूँगी कि नहीं करूँगी, मुझे सोचना पड़ेगा, because this did help me reduce my acne blemishes at one point. It did, but this also breaks me out once in a while. So in the winter months, I'm gonna stay away from this. So I think I'm gonna come back to this maybe in the month of March or something. December, Jan, Feb, I'm gonna stick to my Simple face wash. Simple face wash doesn't break me out ever and बहुत ही gentle है on the skin. क्योंकि skin dry हो जाता है ना in months में. I think Simple is a good choice. ये मेरे पास actually अभी already है, इसका second bottle already रखा हुआ है, लेकिन I've seen that it does break me out a little bit here and there, if not used carefully. But summer months mein I'm definitely going to go back to that and use it again. But right now I'm going to stick to my Simple face wash. Next up I have this underarm roll-on. This is the 4% AHA BHA underarm roll-on from Be Body Wise. This one is a very very good one. I've heard कि इसका जो aqua variant है वो बहुत अच्छा है. मेरे पास तो Flora variant है. ये भी बहुत अच्छा था. It's not at all like a product जो आप लाइक यू नो अवॉइड कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अंडर आर्म पिगमेंटेशन, आई थिंक इट्स रियली गोना हेल्प यू आउट वेरी वेरी मच. स्वेट कंट्रोल, आई डोंट रियली नो बिकॉज आई डोंट रियली स्वेट दैट मच. अगर आप बहुत स्वेट करते हो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट दिस पर्टिकुलर अंडर आर्म रोल ऑन टू यू. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर दैट. नेक्स्ट अप आई एम गोना शो दिस शैम्पू टू यू ऑल. दिस इज फ्रॉम Bare Anatomy. This is the ultra smoothing shampoo. Now this I think I've finished bottles and bottles of. I've used at least 4 to 5 bottles of this particular shampoo, and this somehow really suits my hair. Okay, it really helps in my hair volume. It makes my hair very very smooth, manageable, silky. बहुत अच्छा शैम्पू है. मेरे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा शैम्पू है, एंड मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज यूज़ किए हैं फ्रॉम Bare Anatomy, and I feel like their ultra smoothing shampoo is like the best in the whole range. And I also have their mask with me in the empties. इनका मास्क भी बहुत बहुत अच्छा है. रिसेंटली पिंक फ्राइडे सेल था नायका पे, एंड पिंक फ्राइडे सेल पे ना ये जो कॉम्बो है शैम्पू एंड मास्क का बहुत ही अच्छे ऑफर पे मिल रहा था. आई थिंक कुछ 50 या 60% ऑफ पे मिल रहा था. बट इस बार तो मैंने कुछ और शैम्पूज परचेज किए हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट न्यू शैम्पूज एंड रिव्यू फॉर योर पीपल. बट येस, अगर आप लोग अच्छा शैम्पू एंड मास्क कॉम्बो ढूंढ रहे हो, दिस मास्क सेम अल्ट्रा स्मूथिंग मास्क फ्रॉम Bare Anatomy and their shampoo is really really good. Do try this out if you want like you know shiny smooth silky hair. बहुत अच्छा है बालों के लिए. Bare Anatomy knows how to make their shampoos. All right, next we will talk about this foot cream. This is from Vilva. ये भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है. Now I ना keep experimenting with foot creams because मुझे foot creams personally यूज़ करना बहुत पसंद है. So foot creams मैं काफ़ी सारे खरीदती रहती हूँ जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जस्ट टू सी कि मेरे लिए पर्सनली कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है. एंड दिस पर्टिकुलर फुट क्रीम फ्रॉम विल्वा रियली रियली वर्क्स फॉर मी यू गाइज. दिस हैज़ इंग्रेडिएंट्स लाइक पेपरमिंट ऑयल, आर्गन ऑयल, कलौंजी ऑयल, एवोकाडो बटर एंड मैंगो बटर. ओके, सो अगर आपके ड्राई क्रैक्ड हील्स है, डू ट्राई दिस वन आउट फ्रॉम विल्वा बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड अ फ्यू अदर फुट क्रीम्स दैट हैव नॉट रियली बीन वेरी इफेक्टिव. तो अगर आप लोग को इफेक्टिव फुट क्रीम चाहिए, यू वांट क्विक रिजल्ट्स विथ योर ड्राई क्रैक्ड हील्स, आई think it's a very very good foot cream, you guys. Now I would like to talk to you guys about another body wash. Just look at the packaging. This shows कि मैंने इसको कितना मतलब ऐसे प्रेस कर करके रगड़ रगड़ के ख़त्म किया है basically. This one is from the Nykaa Wanderlust range. Dreaming of Paris variant है ये with notes of champagne and berries. तो मैंने इसको स्पेसिफिकली पिकअप किया था बिकॉज ऑफ द नोट्स. व्हेन आई सॉ दैट दिस हैज़ नोट्स ऑफ शैम्पेन एंड रेड बेरीज, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू ट्राई माई हैंड्स ऑन दिस. आई रियली रियली वांटेड टू ट्राई माई हैंड्स ऑन दिस एंड सी कि इसका फ्रेग्रेंस कैसा होगा बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ champagne and berries just sounded so good. It really really
blew my mind and I had to try it. It's a very good fragrance. I have to say that to you guys. It's a very intoxicating, addictive fragrance. The only sad part is कि Nykaa body washes first इतने ज़्यादा अच्छे lather नहीं करते, and secondly the fragrance does not linger on the body. I just have these two issues with the fragrance. But if you guys are looking for a luxurious body wash under a budget and you don't really care about it lingering, because that part you will manage with your body mist and your body butter and your perfume, then you can go for it. But if you want a fragrance to linger, वैसा वाला body wash, then this one should be avoided in my view. Next I have a micellar water. This one is the soothing micellar water from Swiss Image. So ये मैंने actually I think Amazon से लिया था, and I had seen very good reviews for this one, and I had never used इस particular brand का micellar water, so I had just randomly got it from Amazon. Now this is a good product. It's a good micellar water until you use the Bioderma micellar water. इसको लेने के पहले मैंने Bioderma का micellar water नहीं use किया था. So I was really enjoying this, liking this. But the moment I got my hands on Bioderma, I was like, what is this even? So I was like, नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है. So आप इसको definitely skip कर सकते हो. If you want to go for a micellar water, अगर आपका budget है, तो please go for Bioderma. And if you want something very budget friendly, I think Garnier and Simple specifically makes really good micellar waters. This one you can just avoid, because yes, I was liking this when I was using this pehle, but after using Bioderma, this just didn't make any sense to me, because इससे मेकअप रिमूव करना उतना सीमलेस नहीं है. आपको काफ़ी ज़्यादा कॉटन हो या माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यूज़ करके आपका मेकअप रिमूव करना पड़ेगा. सो थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा. बट yeah, skip this. Okay, let's just quickly talk about some fragrance empties, because I can see a number of them. सबसे पहले I have this one from Skin. This is the Citrus Zest. Okay, this one is really good. And you know what, if you guys like very citrusy fresh fragrances, then definitely try this one out if you haven't already. This is from the house of Skin, so उनके तो आपको पता ही है बहुत अच्छे होते हैं body mists. Now this one comes with the goodness of aloe vera and chamomile. इसका MRP है 895 rupees, and this one comes with 230 ml of quantity. So quantity भी काफ़ी अच्छा है, and like I said, बहुत ही fresh and citrus एक fragrance है. So do try this out if you haven't already. It's citrus and I would like to say a little bit floral as well. So fresh है, बहुत fresh है. So you can try this out. Next I have with me Date. Now Date जो है ना बेला वीटा का, मैं इसका बड़ा वाला बॉटल भी बहुत जल्दी खाली कर सकती हूँ, because मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है. Especially the hint of pink pepper that I get in this fragrance now. I really enjoy that, and I love that. And I feel like ये काफ़ी long lasting भी है. For the price, Bella Vita makes really long lasting fragrances. I've also tried Senorita from them. Senorita somehow I don't like that much, but Date is really good, so it's a must try. If you haven't tried Date from Bella Vita, do try this one out. Next up I have Miss Gorgeous from Nisara. Nisara is this very like ट्रेंडी ब्रांड. निसारा के बहुत सारे परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे नायका पे, मिंत्रा पे, अमेजोन पे. मैंने उनसे काफ़ी सारे ट्राई किए थे, बिकॉज आई गॉट द सेट ऑफ 4 मिनीज, एंड चारों में से आई फाउंड मिस गॉर्जियस टू बी द बेस्ट. एंड अगर मुझे किसी का बड़ा बॉटल लेना हुआ, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी मिस गॉर्जियस. आई एम गोना पॉप द नोट्स समवेयर ऑन द स्क्रीन, आई थिंक हियर. एंड येस, आई एम डेफिनेटली गोना बी बाइंग द बिगर बॉटल ऑफ दिस. आई हैव टू मेनी परफ्यूम्स राइट नाउ ऑन माई कैबिनेट, बट सब कुछ खत्म हो जाएगा. आई एम गोना गो फॉर दिस. आई लव्ड मिस गॉर्जियस फ्रॉम निसारा. इट्स अ very good perfume. Another one which I really enjoyed and I'm definitely going to repurchase is Bombshell from the House of EM5. House of EM5 is a brand that had come on Shark Tank, and उनके कैंडल्स भी बहुत अच्छे हैं. उनके कैंडल्स भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, बट आई थिंक परफ्यूम्स में दिस बॉम्बशेल वन इज सुपर अमेजिंग. इसका भी बड़ा वाला बॉटल आई एम गोना बी परचेजिंग लेटर ऑन, बट ये बहुत अच्छा है. इट्स अ very गुड फ्रेग्रेंस. यू गाइस, नोट्स मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एट एक्सप्लेनिंग नोट्स. ओके, नेक्स्ट अप आई हैव दिस फ्रॉम Moy by Nykaa. This is in the variant Epis. Now this is a very floral fragrance. It might trigger migraine for some people if you have that problem, but otherwise I think it's a good fragrance. But you know, you can skip this. You guys can just go for Joy De Vivre. I think उससे अच्छा तो Moy by Nykaa का कुछ भी नहीं है. उनके पूरे रेंज का वो बेस्ट फ्रेग्रेंस है, तो उसको ट्राई कर लो. इसको आप फिर भी स्किप कर सकते हैं. नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस, बट आई एम नॉट गोना रीपर्चेज एनी टाइम सून.
Next, I have this ceramide oat and ceramide complex 100% mineral sunscreen from the Plum range. This one is really good. Comes with SPF 50 PA 3 times plus and बहुत ही अच्छा sunscreen है. But yes, if you have excessively oily skin, I think you should skip this because it does not really give you a very matte finish. It gives you like a dewy to semi matte kind of a finish, if you know what I mean. So yes, if you have extremely oily skin, इसको avoid कर लेना. But मेरे जैसा अगर आप लोग का ड्राई स्किन है, आप इसको बहुत enjoy करोगे, मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देगा एंड सनस्क्रीन वाला काम भी करेगा. सो इट्स लाइक अ 2 in 1. So it's a very good sunscreen. I am definitely gonna repurchase. And I also love the oat sunscreen from डॉक्टर शेड्स ही है ना वो. येस, डॉक्टर शेड्स का जो ब्लैक एंड येलो एक पैकेजिंग है. ओ गाइज, आई हैव इट राइट हियर एंड मैं सोच रही हूँ डॉक्टर शेड्स का सेरेमाइड एंड vitamin C sunscreen. So sorry, not the oat one. Ceramide and vitamin C sunscreen from Dr. Shades. ये भी बहुत अच्छा है. Again, SPF 50 PA triple times plus. ये और थोड़ा सा वेल सूटेड है फॉर ऑयली स्किन बिकॉज दिस डज नॉट मेक योर स्किन ऑयली एट ऑल. इट्स अ वेरी क्विक एब्जॉर्बिंग काइंड ऑफ अ फॉर्मूला. नो वाइट कास्ट फॉर दिस, बट इसमें थोड़ा सा वाइट कास्ट है. प्रॉपरली आप इसको अगर ब्लेंड कर लोगे तो आप लोग को इशू नहीं होगा, बट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है. सो येस, अभी मेरे पास 2-3 सनस्क्रीन्स हैं. वंस दोज गेट ओवर आई विल डेफिनेटली रिपर्चेज दिस फर्स्ट एंड देन मे बी आई विल रिपर्चेज दिस वन ऑल्सो. दोनों ही अच्छे हैं. Okay, next I have a mask. This one is the brightening pink clay mask from Quench. Quench is a brand which makes Korean products and this one is like really good. You guys know how much I like my clay masks, but yes, winter में I move to my sheet masks. उतना मैं clay masking नहीं करती हूँ, but clay masking का जो season था मैंने इसको बहुत यूज़ किया है and ये मेरे skin को बहुत अच्छे से glow देता था, bright करता था, soft बनाता था. So it's a very good mask. In case you guys are looking for a good clay mask, do try this one out from Quench. It's a very good one. Okay, now makeup में like I said I don't have, मतलब है ही नहीं कुछ, एम्प्टीज ही नहीं है. एक बस ये काजल है फेसेस कनाडा का जो मेरे लास्ट वीडियो में भी था एंड आगे के वीडियोस में भी आपको मिलेगा बिकॉज ये मेरा करंट फेवरेट काजल है. वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी जेट ब्लैक, डजंट रियली बज और स्मज. इट्स अ वेरी गुड वन. सो डेफिनेटली इसको ट्राई करो अगर आप लोग को अच्छा कोल पेंसिल चाहिए ना अंडर अ बजट एंड आपने बाई चांस अगर इसको नहीं ट्राई किया है, यू हैव टू ट्राई दिस आउट. एंड देन आई हैव दिस lipstick. This is in the variant Khoobsurat. This one is from Nykaa. I don't know how many times I've purchased this and repurchased this. I love the shade so much because it's that perfect combination of nude and that pink, you know, which I think really suits my complexion and I just love it. Even today I'm wearing it, you know. It's a very natural shade. It doesn't really give you like a very loud artificial look, which is why I love it. It has a very natural tint to it, which is why I completely love this particular lipstick. Okay, last 2 products and finally we will be through with the empties video for today. The second last product is going to be this particular roll-on from Chemist at Play. This is their underarm roll-on which comes with 5% AHA. Okay, this one doesn't have BHA. This one only has AHA. This one is also really nice. It has that caramel like smell and अच्छा है, ये भी अच्छा है. Helps you with body odor and everything. Pigmentation में भी help करता है. But if I have to repurchase or if I have to choose a underarm roll-on, I will not go for this one. I will go for the B Body Wise. I really like this and this one is way better than the one from Chemist at Play. ये भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है, but इससे भी अच्छा B Body Wise वाला है. So I personally will like to repurchase that. And the last product for today's video is going to be this Insta Remove Dip and Twist Nail Enamel Remover from Faces Canada. This comes with vitamin E, olive oil and aloe vera, has a floral fragrance and this product, you guys, lasted me for more than a year and it's so easy to remove your nail paint with this. I am somebody who loves to change my nail paint and I so completely love this product. It's so convenient and so you like on the go kind of a product. Like I said, 1 साल से ऊपर चला ये मुझे तो पर्सनली ये वाला बहुत पसंद है. लेकिन ऐसे वाले ऑप्शंस ना, ये डिप एंड ट्विस्ट वाले आई थिंक और भी अच्छे ब्रांड्स के हैं. लाइक आई थिंक ब्लू हेवन के है एंड मसाबा का भी है. सो ये वाला भी बहुत अच्छा है. आई विल डेफिनेटली रीपरचेज दिस प्रोडक्ट वेदर आई विल टेक इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ब्रांड और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट दिस डिप एंड ट्विस्ट नेल रिमूवर तो एक मेरे पास होना ही होना चाहिए. So yes, this one is a very good product to have on the vanity. And that's it, you guys. That's it
finally we're done with the empties. So yes, this is going to be the last empties video for the year 2025 on my channel. If you guys still have any questions or want to know anything specific about any of these products, just hit me up in the comments and I will reply to you all. And next year also you're gonna get these kind of empties videos on the channel where I give you speed reviews about all the products that I've been using, because I save all of this just for you guys. So अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ को लाइक कर देना. Subscribe to my channel guys, subscribe if you haven't already, and share this video with your friends. I'm sure it's going to be helpful for them as well. I'm going to see you very soon in my next video, which is going to be really soon. Till then, take care, loads and loads of love, enjoy the festive holiday season, and I'm going to see you soon. Take care, bye bye.